In this video lecture, we will discuss the paper solution of infinite series for the examination Winter 2022 for BE Semester 1 and 2 students for the given subject code of mathematics. This paper contains all these 4 questions from infinite series. So in this video series, we will solve these 4 questions. From this topic, student can score 14 marks. So now let's discuss the solution of all these questions. Question 2b. Show that the series summation n is 0 to infinity e upon pi raised to n is convergent and find its sum. तो ये सम में हमें क्या करना है? फर्स्ट, शो दैट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, ओके, एंड आफ्टर फाइंड सम ऑफ द सीरीज. मतलब के यहाँ पे आप पहले तो जो सम है उसमें आप टर्म ऑब्जर्व करो. सो दिस टर्म कंटेन पावर एन, ओके. तो जब भी पावर एन दिया है तो ये हम पहले तो क्या कर सकते हैं? वी कैन सॉल्व दिस सीरीज यूजिंग रूट टेस्ट, ओके. बट व्हेन वी अप्लाई रूट टेस्ट देन वी कैन ओनली चेक द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, ओके. हम यूजिंग रूट टेस्ट सम फाइंड नहीं कर सकते. गॉट इट? रूट टेस्ट से हम सम नहीं निकाल सकते, लेकिन यहाँ पे क्या है? हमें सम भी फाइंड करना है, ओके. सो दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या करेंगे? सेकंड, raised to power n is given, then we can think for geometric series. मतलब कि हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो गिवन सीरीज है वो ज्योमेट्रिक सीरीज है या नहीं, ओके. एंड इफ द गिवन सीरीज इज ज्योमेट्रिक सीरीज, then using the concept of geometric series, find the convergence and also find the sum of the series, okay. So now let's start. चलो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे? This one is the given series. Now expand this series, put n equal to 0, n equal to 1, n equal to 2 and so on, okay. So first term is what? Put n equal to 0. So first term is 1. Put n equal to 1. So second term is what? Second term is e upon pi raised to 1 plus third term is e upon pi raised to square and so on, okay. Now let's check whether this one is a geometric series or not. Now here, what is a? What is the form of the geometric series? First, a plus ar plus ar square and so on, okay. So now here, what is a? Compare with this. So here a is what? First term. So a is 1 and here ratio r. So find the ratio r first. So what is the ratio r? Each term is divided by the previous term. So let's find this second term is divided by first term, okay. So what we get? R equal to e upon pi. Same way, this second term is divided by first term. So here e upon pi whole square divided by e upon pi. So again we get e upon pi, okay. So every time here each term is divided by previous term, then we get some constant number, and this constant number is what? Ratio r, okay. So here r is what? E upon pi. So this is what? This one is a geometric series, okay. So here what we conclude? The given series is a geometric series with ratio r is equal to e by pi and a is 1, okay. Now let's find the convergence of this series. So for this, let's check the value of absolute of r. So absolute of r is absolute of e upon pi. Now what is the value of e? Value of e is approximate 3.71 and value of pi is 3.41, okay.
So now here denominator is greater than numerator. So obviously this quantity is what? Less than 1. Okay, so here what we get? Mod r is less than 1. So what we conclude? Therefore, the given series is what? Convergent series. Okay, so here mod r is less than 1. So that's why this given series is convergent series. If the series is convergent, then next step, find sum of the series. Okay, so now how to find sum of this series? For this, now sum of the series is summation n is 0 to infinity the formula is a upon 1 minus r. Okay, so now put the value of a and r. This is the formula for sum of the entire series. So using this formula we can find sum of the series. So here a is 1, from this series a is 1, and what is the ratio r? R is equal to e upon pi. Okay, so now put this value. Now simplify this. So what we get? Pi upon pi minus e. Okay, so this is what? This is the sum of the series. Got it? So here what we conclude? We conclude that this one is a geometric series and this series is convergent series, and also the sum of the series is what? Pi upon pi minus e. This is the entire solution of this sum for ready reference. You can refer from this. Question 3a. Test the convergence of the series summation n is 1 to infinity 2n plus 1 upon n square plus n plus 1. अब ये सम में हमें क्या करना है? सिर्फ कन्वर्जेंस ही फाइंड करना है. ओके, चलो पहले हम क्या करेंगे? ये सीरीज में जो टर्म दी है उसका हम फॉर्म चेक करेंगे. तो यहाँ पे जो टर्म है उसका फॉर्म क्या है? दिस वन इज पोलिनोमियल इन एन. ओके, तो ये देखो न्यूमरेटर में भी क्या है? पोलिनोमियल इन एन, एंड डिनोमिनेटर में क्या है? पोलिनोमियल इन एन. ओके, तो जब भी पोलिनोमियल दिया है तब हम क्या करेंगे? वी यूज लिमिट कंपैरिजन टेस्ट. ओके, लेट्स डिस्कस हाउ टू अप्लाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट स्टेप बाय स्टेप. चलो फर्स्ट हमें क्या करना है? फर्स्ट वन इज व्हाट? द गिवन सीरीज इज ए एन सीरीज. सो सीरीज ए एन इज व्हाट? सीरीज ए एन इज 2n plus 1 upon n square plus n plus 1. Okay, now this one is my given series. For this given series, find न्यू सीरीज bn. ओके, तो अब हमें क्या करना है? एक सीरीज bn फाइंड करना है कंपेयरिंग विथ सीरीज an. तो अब सीरीज bn हम कैसे फाइंड करेंगे? इफ पोलिनोमियल इज गिवन देन सीरीज bn इज इक्वल टू, हाउ टू फाइंड? नाउ ऑब्जर्व द टर्म इन सीरीज an. Here in numerator, what is the maximum power of n? N is 1. Okay. Now also observe in denominator. What is the maximum power of n? N square. Okay. So now take it. Now 1 n is cancel out. So what we get? 1 upon n. So now this one is what? This one is the series bn. Okay. So now after comparing series an, we get new series bn. Clear? चलो नेक्स्ट हमें क्या करना है? नाउ नेक्स्ट फाइंड लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an अपॉन bn.
मतलब कि अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं. ओके, सो नाउ फाइंड दिस लिमिट. सो व्हाट वी गेट, limit n tends to infinity. Now what is an? An means nth term of series an. So this is 2n plus 1 upon n square plus n plus 1 divided by bn. Bn means also nth term of series bn. So this is 1 upon n. Okay. Now evaluate this limit. So now here shift in numerator. So what we get, n upon 1. Next step, generally n tends to infinity is given. So in this case try to convert it into 1 upon n form. Okay, so from here take n common. N is common, so what we get, 2 plus 1 upon n multiply by n as it is upon here maximum n is what, n square. So again here take n square common. So we get 1 plus 1 upon n plus 1 upon n square. So now this n square is cancel out. Okay, now apply limit. So 1 upon n become what, all this quantity become 0. 1 upon infinity 1 upon infinity becomes 0. Okay, so what is the answer? Answer is 2. So now here what we get, this limit value is what, here we get, this one is finite and non-zero answer. Okay, so from limit comparison test what we conclude here, series an and series bn both converges or diverges together. मतलब कि हमें यहाँ पे क्या पता चला कि अगर सीरीज bn कन्वर्जेंट है तो सीरीज an भी क्या होगी, कन्वर्जेंट. और अगर bn डाइवर्जेंट है तो सीरीज an भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट. तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से हमारे पास ये कंक्लूजन आ गया. ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास सीरीज bn है. ओके, और जनरली हम सीरीज bn कैसी सीरीज सिलेक्ट करते हैं, एक ऐसी सीरीज जिसका कन्वर्जेंस हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. ओके, तो जनरली सीरीज bn क्या होती है, आइदर ज्योमेट्रिक सीरीज और p सीरीज. बराबर है. तो अब हम क्या करेंगे, bn का कन्वर्जेंस चेक करेंगे, क्योंकि bn का जो कन्वर्जेंस होगा वही कन्वर्जेंस किसका होगा, सीरीज an का होगा. ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्टेप, लेट्स स्टार्ट टू फाइंड कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज bn. Now what is the series bn? Series bn is equal to series 1 upon n. Okay, now observe, this series is what, series bn is a p series. p series का फॉर्म क्या होता है, p series क्या होती है, 1 upon n raised to p. Okay, so now here compare with this. So what is p here, p is 1. So this is a p series with p equal to 1. Okay, अब p series के लिए कंडीशन क्या है, when we say that p series is convergent, if p is greater than 1 then the p series is convergent series, and if p is less than or equal to 1 then the p series is divergent series. Okay, तो अब यहाँ पे क्या है, p equal to 1 है. So that's why what we conclude, therefore series bn is
what? Divergent series. ओके तो अब यहां पे हमें क्या मिल गया? bn डाइवर्जेंट सीरीज है, तो फ्रॉम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट सीरीज bn एंड सीरीज an बोथ कन्वर्जिस एंड डाइवर्जिस टुगेदर. ओके मतलब कि bn का जो बिहेवियर है वही an का होगा, ये हमने यहाँ पे प्रूव किया. ओके और यहाँ पे क्या है? bn डाइवर्जेंट है तो an भी क्या होगी? डाइवर्जेंट. ओके सो नाउ लेट्स राइट द कंक्लूजन. देयरफॉर series an is equal to is also divergent. Okay. This one is a solution for ready reference.